lockdown has happened and we are all at home. And well, I have been busy talking to the press and communicating, spending a lot of time with my children, playing games. We play a lot of dumb charadas in the evening. And yeah, we're just doing what regular families do, baking and cooking and everything regular. What's going on? How does your daily routine look like nowadays? Daily routine is very different because everybody's at home, so my kitchen is not stopped. There's everybody in the kitchen, one after the other. I have two daughters, so they are like cooking, and there's a lot of basic food being made, which is lunch and dinner. But besides that, we have lemon cake, we have cinnamon, we have um, today we had mawa cake, and then we have all different kinds of breads. So there's continuous kitchen. So kitchen has become a central place of activity, and I enjoy doing a lot of puja path. So I in the morning I spend doing a lot of puja, but that's something which I do on regular basis. But the additional thing that has happened is this, and the evening we all sit down together and spend good 1.5 2 hours playing dumb charadas. Otherwise, I think normally in the day we're all chilling in our rooms, watching our shows. The girls are on the laptop, so it's a very chilled day. And yeah, I think that's fine. I think we're just learning to live with ourselves, with the family instead of. I think in today's time, everybody spends a lot of time with their friends. Everybody. I mean, the concept of being with home and so much with family is really lost. So I think that is a huge change. So that's like nature trying to tell you get back to your family. So, ma'am, Ramayan Rerun has created a wider audience, and more youngsters have been discussing the show on social media. And you all also have been sharing many unseen photos from those days. Did you expect this kind of response? No, of course not. Not the way we have been accepted and the way people have loved. And I definitely love it because the younger kids, the younger generation, they are really enjoying it, and they are reaching out. So for me, that's a huge victory in the rerun. And no, I didn't expect the social media and the press to go so gaga over it. So the press, the media, and the millennials, I think everybody is hooked on to it. There's such lovely memes which are coming out, which is so fascinating because for us, when we were there in those days, they were like good articles which came up, but nothing more than that. But this is like I'm actually interacting with people. So I think there's more transparency also. I am on Instagram, I'm on Facebook, so I'm actually interacting with quite a few of my fans. I mean, I do try to pick up one or two people, every day, and send a message across. So I think there's a lot of communication with press and people and fans in general. So I think it's nice. A lot of So love. recognition that time and now another boost of recognition. How has life changed post the rerun? Like you were famous then also, but now you are being recognized by the Instagrammers and TikTok generation. How does that feel? Yeah, so that's what I'm saying. It's very different because in those days it was just you have Times of India, so you have Times, you have the main publications. They would be spreading out the articles, and the papers and the magazines, of course the magazine lasted fortnightly for a month. So it was there in their house. It's not like it wasn't there. Even the papers, it was talked about. And definitely when you think about it, this time the the feeling is far more because I'm giving 6 interviews in a day, and I'm constantly talking to somebody or the either throughout the day, right from 11:30 to 12 I start the day, and this is the last one which I kind of finish it off at 6:30 I finish off. So that's how it is. So initially also we had a lot of press coming up, but the press was very different. It was coming home, talking. Nobody would even speak on the phone. Everybody wanted to come home and talk. So it was very different. People wanted to take appointments, come and spend time.
This is far better. I mean, I'm liking the fact that everything is over on the phone and Insta and एक video भेज दीजिए. So I'm doing the video also. I'm talking also. So it's a very different way of going about it. It's far more advanced, I would say. Yeah. So, fans those days, as you have shared earlier many times, that they used to visit you on sets and Yeah. like worship you. Yeah. How has fandom changed for you? If we talk about recent times. In recent times, I've not stepped out, so I really have no idea what reaction I'm going to get once I step out. And I have been living in where I am living since the last 24 years and 25 years actually now. So I don't know. I mean, they're going to just react with me very, very normally because they've always known me that yes, this is Deepika ji, and she's once played Sita, and she was very famous, very popular. So I don't think that they're going to look at me with a different vision, but I definitely feel that the new generation, if I meet them or they see me somewhere, they would recognize and they would be like, oh my god, this is her. So the ones who have crossed their 30s and 40s and who've experienced and seen Ramayana in those days, I think are aware that, I am the Pika and I am living here, and. So when I step out into the world now, I don't know what the reaction is after the lockdown. So I need to see how people react with me after lockdown. I know. But any such fan moment that has stayed with you over the years? Um, Nothing I very clearly remember because all my fan moments have been about somebody making paintings for me, somebody coming and touching my feet, somebody keeping a child on our feet and saying, "Okay, my baby's just been born." Normally, mandir leke jate, within the 40 days. So they would come to us and would say, "Okay, bhai, you kind of first bless the children, and then we will take them to the mandir." So those kind of things have happened with us constantly. So I think those have happened. Yeah, I mean, I've not had people stalking me and writing love letters or being nasty. No, I've just been very very respectful. So it's just always been that, and people have crowded around to see us in flocks and flocks and flocks, like thousands and millions people would just flock when they would know that we are attending a function. So I mean, if you estimate like okay, this is a place with 50,000, and we would have another 50,000 standing outside the auditorium just to see us. So it was that kind of craze, yeah. So it was not normal. So with so many iconic shows rerun happening on TV, which ones have you been watching? Honestly, I've had no time. I could not. I barely sometimes miss even Ramayana. I catch it up later on because I have an app which I can see the Doordarshan app. So sometimes I don't even get a chance to watch that. So nothing at all that I've been watching. I've just been busy giving press interviews at this point of time. So in between, I just eat, and in between, I just have a cup of tea. In between, I'm picking up calls from the industry or somebody calling up from somewhere who need my attention. I need to give a video for something. Sometimes it's an appeal that the government wants. So something of either has been happening. So really nothing at all. But Bunyad is something I would have liked to watch because I used to watch Bunyad at one time when I was a child. Yeah. Ma'am, you have said many times that you used to dress up according to your on-screen character of Sita Ma. But do you think that because of that, it restricted your career growth? See, when I said that I dressed up as Sita Mata, I just meant that I always wore a sari in public. I did not dress up in an orange sari, did bindi and did a chuda or anything like that. I just wore a regular sari when I went out, which I think most people do it. But for my age, because I was just in my late teens and early 20s, so it's not something that actresses did it in those days, wearing so much of a sari. But I did it because I thought it looked far more respectable for me to carry on that image. So I was not dressing up and doing a fancy dress competition. So I think it was perfectly all right. And yeah, of course, I've repeatedly told everybody the same story. Yeah, there was a little restriction, but we lived by it. Yeah, we had to kind of live by the responsibility, and I think we are all okay about it. It's all gone and done, over and done with. Yeah, we've all moved on Uh, that space.
आपने काफी सारी मूवीज भी किए थे रामायण से पहले, बट रामायण ने लाइक इंस्टेंट रिकग्निशन और फेम दिया आपको। लाइक रामायण का पहला दिन जो शूट था, उसके बारे में लाइक इफ यू कैन शेयर योर My फर्स्ट डे Ramayana एक्सपीरियंस। first day of shoot was actually the the episode where I played Lakshmi ji. So I played Lakshmi ji, and that was the first day of shoot. So there was a lot of chaos, a lot of confusion. बहुत बड़ा सेट था, बहुत लोग थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे करना, because there was a lot of chroma involved. So everybody was just learning. Of course, there was Dada Dadi and Vikram Betal as a background for the makers also. But I remember I was sitting in the position of Lakshmi ji for 7 days के episode का 7 दिन मैंने वही किया है. मैं सिर्फ एक जगह पे बैठी थी विष्णु जी के पैर के पास. So it was a lot of confusion around for the first episode, because that needed even to go to the Doordarshan for approval. So it had to be a certain way, and Papa was very particular, how it should look, how it should not be. So we put in a lot of effort, and in the bargain, I think as an actor, sometimes you just realize there's not much input that you have to do, but be there with focus. Sometimes you don't have work. Like I was not doing anything. I did not even have a dialogue, but I was there for 7 days. So sometimes it just happens like that. तो आपने रियलाइज कब किया कि लोग ऐसे आपको सीता माँ के रूप में रिकग्नाइज कर रहे हैं एंड यू हैव टू पोर्ट्रे अ सर्टेन इमेज हाँ इन फ्रंट ऑफ देम? हाँ. अभी की बात कर रही हैं आप? उस टाइम की। देखिए उस टाइम तो मैंने कुछ ज्यादा काम नहीं किया. मैंने 3 पिक्चरें की थी और तीनों कोइंसिडेंटली हैपेंड टू बी विद राजेश खन्ना. And I was playing a very nice regular housewife with Rajesh Khanna. खुदाई, रुपया 10 करोड़, and I did I think घर एक संसार. So उसमें मैंने बस very nice typical Indian lady, साड़ी पहनी हुई लेडी का रोल किया था. तो I think it was more than accepted. बाकी मैंने regionals बहुत की, एंड वहां पे भी जितनी भी रीजनल्स मैंने की, मैंने सारी लंबी चोटी एंड वेरी इंडियन बट गुड पावरफुल रोल्स, मैंने वो उस किस्म के मैंने रोल किए. सो आई थिंक इट वाज कंप्लीटली एक्सेप्टेबल फॉर एवरीबडी टू सी मी लाइक दैट. दे लव्ड मी. इनफैक्ट जहां जहां मैंने पिक्चर की सब सुपर डुपर हिट हुई हैं. सो आई थिंक इट वाज ओके. इट वाज नॉट अ बिग डील. हमने रामायण को लेकर काफी सारे बातें की. फैंस हैव बीन आस्किंग कि अगर आप उत्तर रामायण का एक्सपीरियंस शेयर करें. तो उत्तर रामायण का ये हुआ था कि बाय द टाइम उत्तर रामायण शुरू हो गई, सागर साहब के ऊपर बहुत सारे केसेस थे. तो सागर साहब मोस्ट ऑफ द टाइम उत्तर रामायण की शूटिंग में डायरेक्शन नहीं करते थे, स्क्रिप्ट भेज देते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कोर्ट केसेस चल रहे थे. क्योंकि रामायण में उन्होंने काफी चीजें दिखाई थी which he felt was not correct. And जो फोक स्टोरीज होती हैं, ही सेड आई विल नॉट टेक फोक स्टोरीज. में जो एक्चुअल रामायण है, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो मराठी हो, या वो वाल्मीकि या तुलसीदास की, उस रामायण के बेसिस पे से उन्होंने एक अपनी रामायण क्रिएट की थी, लेकिन विद दैट एज अ रिसर्च. तो बहुत केसेस रहते थे उनके लिए. सो उनके बेटों ने डायरेक्ट की थी काफी हद तक, मोती सागर एंड आनंद सागर. So that is the beginning of Uttar Ramayan. And Uttar Ramayan में इतना कुछ हो चुका था कि it just fell into place. And उस टाइम पे उत्तर रामायण जैसे शुरू हुई, मैं पहले तो 28 दिन उमरगांव में रहती थी. उसके बाद सिर्फ मैं 10 दिन, पहली तारीख से 10 तारीख तक मैं रहती थी उमरगांव. फिर दूसरे जो 20 दिन थे मैं कैलकाटा और साउथ के लिए मैंने दिए हुए थे. तो मैं बंगाली पिक्चर भी कर रही थी और मैं साउथ की पिक्चर भी कर रही थी. सो ये सब चल रहा था. So this is how it was. And उत्तर रामायण की स्टोरी is again a very simple story. कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि रामायण में जो राजा रानी, वो जो पूरा ग्लैमर लग रहा था, वो बहुत कम हो जाता है, because it becomes a very simple story. Simple story of वाल्मीकि जी, लव कुश, जैसे माँ का जो प्यार है, माँ किस तरीके से बच्चों को बड़ा करती है, ललाबाई सुनाती, गाने सुनाती हैं, उनको सिखाती है पहली बार कि बो एंड एरो आप किस तरीके से यूज करते हैं, बातें करती हैं.
तो इट्स अ स्टोरी ऑफ अ मदर, अ सिंगल मदर, एंड वो कैसे अपने बच्चों को बड़ा करती है. तो जैसे शी आई थिंक इज द फर्स्ट सिंगल मदर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर. सो वो पूरा जो एक सेटअप है, वो पूरा एक फ्लेवर जो बोलते हैं ना, वो अलग है. सो इट लुक्स very different from the real Ramayana, the actual Ramayana. But again, it's a very interesting story, very very interesting. मतलब जिस तरीके से वो घर छोड़ के चली जाती हैं, क्यों जाती हैं, जैसे स्टोरीज है कि धोबी के वजह से जाती हैं. वो एक कहते हैं ना कि हम लोग के यहाँ पे कहते हैं कि इट इज लोक कथा. तो ये लोक कथा हो गई है. एक्चुअली ये बात नहीं है. वो जाती हैं क्योंकि ऑफकोर्स बातचीत सुनी राजा ने, राजा राम ने ये बातें सुनी, लेकिन सीता जी ने कहा कि नहीं आप जाइए क्योंकि ये आपका धर्म है, एंड इट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू बी अ गुड किंग देन टू बी अ गुड हस्बैंड. सो वो एक सीख उनको मिलती है. तो ये जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जिस तरीके से आपको जीवन जीना है और जिस तरीके से आपका जो कर्तव्य है वो निभाना है, उसका जो बैलेंस है, आई थिंक हैज बीन वेरी 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 वंडरफुल. दैट शी लीड्स द पैलेस व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट. सो आई थिंक इट वाज वेरी वेरी टचिंग. एंड वापस जब बच्चे आते हैं, जो लड़ाई होती है, जिस तरीके से धरती में समा जाती हैं सीता जी, आई थिंक बहुत सुंदर है. आप देखिए एंड पता चलेगा आपको. वहां पे स्वप्निल जोशी जो है आपके बेटे का किरदार निभाया था. जी हाउ हाँ. वाज द वर्किंग एक्सपीरियंस विथ हिम एज अ चाइल्ड एक्टर देन? He was a very enterprising child and very good looking, and I used to paint a lot in those days. So he used to come to me and say, and he would tell me, yeah, please teach me how to paint. I really love painting. And he was always talkative, and he always knew he wanted to be an actor. Whereas the other boy, he always knew, Mayuresh, कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, बस इतना करके मैं कुछ और करूँगा. Swapnil, of course, is into Marathi industry and he's doing quite well for himself. So I think 8 या 10 साल के बच्चे होंगे वो लोग उस टाइम पे, लेकिन उनको एग्जैक्टली पता था कि उनको क्या करना है. एंड वेरी फ्रेंडली, वेरी टॉकेटिव ऑल्सो. स्वप्निल बहुत बातूनी नहीं था उस टाइम पे. हाँ. तो आपने उसके बाद काफी सारे शोज भी किया, विक्रम बेताल, नहीं, विक्रम बेताल उत्तर रामायण. मैंने पहले किया. उसके बाद मैंने सिर्फ टीपू सुल्तान किया है, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान. एंड आफ्टर दैट आई वाज डूइंग रीजनल मूवीज व्हाटएवर. एंड ये 3 पिक्चर मैंने जो राजेश खन्ना के साथ. तो और हिंदी टीवी शोज क्यों नहीं लिया आपने? बिकॉज टाइम भी नहीं था, बहुत काम था. सो देयर वाज नो क्वेश्चन कि मैं अपने आप को इतने सारे दिन कहीं पे भी वो स्पेंड कर सकूं. एंड ऑलरेडी मैंने बहुत टेलीविजन में कर चुकी थी बिफोर दादा दादी एंड विक्रम बेताल ऑल्सो. सो बहुत काम किया मैंने. एंड आई ऑलवेज वांटेड वेयर आई वाज क्रिएटिवली ऑल्सो हैप्पी. एंड जब मुझे मूवीज मिल रही थी तो आई थॉट मूवीज वाज अ वेरी गुड बेट बिकॉज बहुत अच्छे रोल्स मिल रहे थे मुझे. सो मैंने बस वही शुरू कर दिए. बहुत सारे फैंस हैं यहाँ पे जो आपको एडवांस में बर्थडे विश कर रहे हैं. थैंक यू, थैंक यू. अभी 2 दिन और बाकी हैं. थैंक यू वेरी मच. तो मैम ये बताइए कि उस टाइम में कितना डिफिकल्ट था शूट करना मैथोलॉजी शोज? This is a very very I don't know what kind of a question is this. ये difficult इसलिए नहीं था क्योंकि आपके पास जो हम लोग कर रहे थे उसके अलावा कोई comparison नहीं था. There was no other barometer for you to talk and compare and say, oh my God, अगर बॉम्बे होते तो कितना अच्छा होता है, ये फैसिलिटी मिलती. But there was nothing like that. ना वहाँ फैसिलिटी है ना यहाँ फैसिलिटी है. So there was nothing really for us as a facility point of view. And where creatively it was concerned, I think हम लोग को पता था कि हम लोग लेकर के हाथों में हैं और उनके साथ हम लोग काम करें. तो अभी न्यू वन थी कि कभी कभी तो हम लोग मतलब देखते भी नहीं थे मॉनिटर पे कि कैसा शॉट हुआ. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं तो शॉट देके निकल भी जाती थी, मेरे साइड पे बैठ जाते थे. कभी कभी बहुत मन करता था चलो देखो कैसे कैसे हुआ है.
सो हमको मालूम था कि बहुत अच्छे मेकर के साथ काम करें, एक्सट्रीमली एक्सप्रेसिव एंड वी वर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर वर्क ओवर देयर. तो तकलीफ तो मतलब हमारे पास अभी आज अगर बोलो कि जो हमने तकलीफ सहन की थी रामायण में अभी करो, तो यू हैव समथिंग टू कंपेयर. तो वहां पे उस टाइम पे कुछ कंपेयर करने के लिए कुछ था ही नहीं, तो जो था वो यही है. सो इट वाज ऑल राइट. जंगल में शूटिंग कर रहे थे तो जैसे होगा वैसे ही था. बट टीवी के कंटेंट की बात किया जाए तो आपको आपको क्या कहना है आज के टीवी का कंटेंट? आप एज अ व्यूअर आप देखते हो, पसंद करते हो? नहीं, देखिए मैंने पिछले 10-15 साल से मैंने टीवी शुरू ही नहीं किया है. सो आई हैव नो क्लू अबाउट टेलीविजन. एंड मैंने लास्ट आई थिंक कसौटी जिंदगी की मैंने देखी थी. सो आफ्टर दैट आई डोंट रिमेम्बर वॉचिंग एनी टेलीविजन एट ऑल. तो और जो भी थोड़ा बहुत मैंने सुना है यूट्यूब पे ये वो वहाँ पे, तो मुझे डेफिनेटली मैं मेरी मदर इन लॉ के घर पे जब जाती हूँ तो आई सी द टेलीविजन. But I definitely think it's too loud. Everything is very over dramatic. मतलब sets, people's clothes, people's makeup. मतलब it is not normal. It's just not normal. मतलब इतनी बड़ी आई मेकअप हो रहा है तो मतलब कुछ अजीब मुझे लगते हैं सब. आई डोंट नो कि आप इसलिए करें क्योंकि पब्लिक को चाहिए, या आप इसलिए करें क्योंकि क्योंकि अगर थोड़ा और ड्रामेटिक होगा तो शायद आपका सीरियल उस सीरियल से बेटर दिखेगा. आई डोंट अंडरस्टैंड द रीजन. लेकिन आई थिंक ये हर चीज में एक मेन मुद्दा रह जाता है, वो है नॉट ओनली गुड कंटेंट बट अ गुड अ वीव. क्योंकि आई फील व्हेन यू आर जस्ट ओवर ड्रामेटिक इन योर ड्रेसिंग, यू आर ओवर ड्रामेटिक इन योर प्रोडक्शन, योर एडिटिंग, तो you might try to capture your audience at that point of time, but kahin na kahin mujhe nahi lagta hai ki the TRPs are genuinely going up because there's something which is missing. wo jo magic kehte hain na, wo magic is definitely lost from television. And I think everything is responsibility. मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ परफॉर्मेंस बुरे हैं या सिर्फ प्रोडक्शन ऐसा है या सिर्फ ये है. आई थिंक ये हर चीज को मिला के होता है, तो बहुत ज्यादा ओवर ड्रामेटिक एंड अननेचुरल एंड अनरियल है. एंड आई थिंक सम शोज आई हैव हर्ड आर वेरी रिग्रेसिव आल्सो. सो मुझे लगता है कि टेलीविजन इतना पावरफुल मीडियम है कि आप सीख सकते हैं वहाँ से, सिखा सकते हैं. यू आर रीचिंग टू द रूट लेवल ऑफ इंडिया. तो अगर आप कोई कोई ऐसी स्टोरीज, ऐसी सब बातें दिखाते हैं जो आप रिग्रेसिव बना रहे हैं कि बहू और बेटे के बीच में, या बहू और बेटी के बीच में, या सास और बहू के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अच्छी इस्टेब्लिश नहीं होती है, सब लोग खुश हो रहे हैं, द सास इज वेरी बैड. तो मुझे लगता है ये सब जमाना इज वेयर यू शुड बी टॉकिंग ऑफ समथिंग मोर रियल एंड मोर today's, teach and educate via your serials. So I don't think all that is happening. So I don't know. I'm really nobody to. बट It's not my place to talk about these things, but I don't think it's working. I don't think it's working at all. बट अभी अगर आपको कोई टीवी में रोल मिले तो क्या वो आप करोगे? मैं मना नहीं करूंगी क्योंकि आज मैं जो भी हूँ वो टेलीविजन की वजह से हूँ. तो मैं मना नहीं करूंगी, बट डेफिनेटली मैं रोज सुनूंगी. अगर मुझे कन्विंसिंग लगता है तब आई वुड थिंक अबाउट इट. या बिकॉज इट हैज टुडे आई एम व्हाट आई एम इज बिकॉज ऑफ टेलीविजन. मैं व्हाई शुड आई फॉरगेट दैट. आपने बीच